guys, I am back with another book review. Okay. Actually ये book review मुझे बहुत पहले बनाना चाहिए था, but since I started this series and तो I recently started posting on YouTube all the reviews and stuff. तो ये kind of मुझे सदियों पहले बना लेनी चाहिए थी ये particular ये book review this video पर ठीक है, better late than never. And I'll tell you guys one thing. So ये book ये series okay, I'm not gonna show. पहले मैं थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करूँगी. तो ये सीरीज ना मुझे 2010 में मिली थी, शायद से 2010 या 11 में फर्स्ट बुक इस सीरीज का. तो आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड दिस इज द फर्स्ट बुक दैट गॉट मी इनटू mythological fiction. इसके पहले मैं mythological fictions नहीं पढ़ती थी, मैं actual scriptures पढ़ती थी, मुझे stories सुनने मिलते थे मेरे दादा दादी सबसे. But this is the first book जिसने मुझे mythological fiction की तरफ डायरेक्ट किया. I got to know कि अच्छा ऐसा genre भी होता है जिसमें stories होते हैं and no everything is based on scriptures, but then it is actually not the scripture. So yes, this was the first series that I read, first book actually that I read in the genre of mythological fiction. And then तो वो series बस शुरू हो गया. उसके बाद I think I became a person who loves to read mythological fiction now. I mean मेरा cupboard 60% books mythological fiction पे ही based है. So apart from the recent ones that I got in the past 10-12 years जो भी मैंने खरीदा है, most of the books are mythological fictions or actual mythological religious books, religion based books or things like that. Okay, let's start with this one. Okay, so this is the book that got me into reading mythological fictions. And I love this book to such an extent that I can't even explain. I mean, yeah. This candle is distracting. Aesthetics के लिए रखा था, but it's distracting. Anyway, so coming back to the book series, okay. This book got me into, as I already told you, this got me into reading. And the way Amish Tripathi has portrayed all the characters, it's respectable. It's I mean आप respect भी करोगे उनका, आप you'll fall in love with the characters as well. I mean everything is there. It's a roller coaster of emotions when you read this book. Okay, especially the first one. I mean, I found it pretty simple and yet mesmerizing. तो ये पहला बुक था जैसे मैंने आपको बताया, and I'll tell you few things about these books. तो इसमें क्या होता है ना कि every character is based on the scriptures that we have read in reality. Okay, all the ancient scriptures. So we have the names, real names of people, of the gods, but actually ये इनमें से कोई भी god नहीं है. And the main, I think, agenda of this book was to convey कि आप भगवान अपने कर्मों से बनते हो, आप भगवान ऐसे ही कोई नहीं हो जाते. And how a simple man with few character traits evolved to be God for generations to come. Okay. तो इस पर्टिकुलर बुक में आपको हर वो नाम मिलेगा जो आप शिव पुराण में देखते हो या पढ़े हो या आपने देखा है. सारे नाम बहुत ही फेमिलियर हैं. द स्टोरी लाइन इज सिंपल. इट्स ज़्यादा तोड़ा मड़ोड़ा नहीं गया है स्टोरी को. सो शिव विल फॉल इन लव विद सती एंड द राइड विल गो ऑन. बट येस, एंड देन देयर इज प्रजापति दक्ष. तो प्रॉब्लम्स होती हैं शादी में, बट दिस टाइम द प्रॉब्लम would the problem be created by her father or
someone else, then that is up to you to read. I'm not going to reveal the story for because many people might not have started reading books yet. And for the ones who have the habit of reading books, please try this book for once. Please try this book for once. I mean, you will not regret reading this. और ये अभी तक सेल हो रही है, that means this has that potential. और मैंने तीनों बुक पढ़ी है इसकी. Okay, so first one was Meluha, second is the Nagas, and third one was the Oath of Vayuputras. And I'll tell you my personal, I don't know, my personal view on this. When I had already read the Oath of Vayuputras, and then I saw this movie Bahubali. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द सीन्स जो बाहुबली में दिख रहा है मुझे, ये तो मैं कहीं देख चुकी हूँ. एंड देन सडनली आई रिमेम्बर्ड कि मैंने देखा नहीं है ये सारे के सारे सीन्स, ये सारे वॉर टेक्निक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने वो तो वायुपुत्रास में पढ़ी है. एंड इट वॉज माइंड वॉकिंग फॉर मी. एंड देन व्हेन आई रिसर्च ऑन इट, आई गॉट टू नो कि एंशिएंट वॉर टेक्निक्स हैं जो मूवीज में भी दिखाते हैं, जो स्टोरी बुक्स में भी लिखते हैं, एंड अदर नॉवेल्स में भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ. तो इट वॉज जस्ट अ फनी स्टोरी दैट हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज वाचिंग बाहुबली. खैर, and the things written in this book are so detailed, every action, everything, that आप खो जाओगे उस बुक में. आपको लगेगा सब कुछ बस आपके आँख के सामने चल रहा है. इट्स लाइक अ मूवी रनिंग, प्लेइंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज. तो ये बहुत ही अच्छे डिटेल में लिखी हुई ये बुक है. अर्लियर मैं ऐसे लिखती थी क्योंकि मैं कॉलेज में थी ना, तो कॉलेज में बुक्स इधर उधर हो जाते हैं. तो आई नो आई डोंट लाइक डूइंग दिस, आई नेवर लाइक्ड डूइंग दिस, क्योंकि मैं हमेशा से घर पे रहती थी. बट देन कॉलेज शिफ्ट हुई तो धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि वो चीज़ें गायब हो सकती हैं. So I started writing my names like this, and this is the only way that your book can be saved, because then other people won't be able to tear off your name or anything without actually destroying the book. So this way, the book won't, without actually destroying the book, a person cannot steal. That is why I started doing this, and just to keep a record कि ये मेरा book है. I don't like giving out books. I do lend my books, but I want it back in 1 or 2 weeks. I mean, that is enough to read this thick book, okay? 2 weeks are more than enough. And if you're a slow reader, please get your own book, right? That is a decent etiquette when you are borrowing books from a person who loves their collection of books. Okay, coming back to this series. So, प्लीज़ अगर आप mythological fiction शुरू करना चाहते हो and you want to read something that is sweet, simple, yet has information, and you want to watch, you are आपको इंटरेस्ट है ancient history में and the war techniques and everything, so please go for this series. I mean, I'll come up with the second review for the second series as well. But this is mind blowing. I mean, I still love the entire series, but this book holds a very this book holds a very special place in my heart. I mean, you can see the cover. This is age old, पर बहुत ही अच्छी book है, guys. बहुत अच्छी book. Please go read and let me know in the comments अगर आपको ये book अच्छी लगी तो. और ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मैं भी रिसेंटली बना रही हूँ कि मैं ये बुक बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली एक चीज़ तो याद नहीं है इन दोनों की. बट ये बुक आई हैव रेड मल्टीपल टाइम्स. It should go and reread their books, because there are so many things you'll find every time you reread a book. Every time you'll find a new information or a new quote or a new sentence that will bring another meaning to your life. And this book has a lot of them. I personally love this one. Thereafter, this book is like, as much as Meluha, I'm sorry, in comparison to Meluha, I would rate this book as an 8. Okay, because it was like just the story continues like that. But in this book,
I waited for this book a long time because ये ना ऐसा हो गया था कि हाफ सीरीज आप देख के बैठ जाते हो और आपको फिर वो रेस्ट ऑफ द सीजन चाहिए होता है तो मेरे लिए इस बुक के साथ ऐसा था आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द रिलीज ऑफ दिस बुक बट देन चलो मुझे मिला एंड देन आई राइट दिस बुक mind blowing details. I mean, I never read details like this, and because this was like uh, action in front of my eyes. I mean, I could relate ki, and I could see कि अच्छा कौन क्या कर रहा है वहाँ पे. Anyway, ऐसा ही था कुछ तो मेरे लिए ये बुक और ये सीरीज हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा. आप भी पढ़ के देखो एंड लेट मी नो अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो. ओके फर्स्ट बुक ये है ठीक है सेकंड बुक ये है एंड थर्ड ये है सो प्लीज स्टार्ट बाय रीडिंग दिस यू कैन नॉट रीड ऑल दीज बुक्स इन अ स्टैंड अलोन these are not standalone this is a series so the story starts from Medusa and then it continues in the Nagas the last one is the Oath of Ayutthaya okay इस मेरे फ़ोन का मेमोरी लो हो गया था anyway तो मैं कहाँ थी बस तो इट्स लाइक अ सीरीज आप एक पढ़ोगे तो आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा एंड दूसरा पढ़ना पड़ेगा तभी आप तीसरे बुक को समझ पाओगे चलो सो read the series guys and let me know in the comments if you liked the book और स्पेशली अगर आप माइथोलॉजिकल फिक्शन सीरीज शुरू करना चाहते हो तो माइथोलॉजिकल फिक्शन जॉनरा अगर आप शुरू करना चाहते हो तो इट्स द बेस्ट बुक टू स्टार्ट विद ट्रस्ट मी इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड you are gonna love it. Bye bye. See ya.